बैटल इन्फिनिटी मेटावर्स फोकस फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म ने बुधवार को एक नए और बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पैनकेक स्वैप पर अपनी लिस्टिंग की घोषणा की। प्रीसेल में IBAT को बिना किसी प्रमोशन के लॉन्च किया गया था, फिर भी यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी और इसके बेहतरीन फीचर्स के कारण लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और इसके बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पर 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। अब यह क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पैनकेक स्वैप पर लिस्टेड होने जा रहा है, जिसके लिए बुधवार को बैटल इन्फिनिटी का लॉन्च इवेंट दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि भारतीय अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और क्रिकेटर इरफान पठान। इस अवसर पर बैटल इन्फिनिटी के संस्थापक सुरेश जोशी ने कहा, or whatever you have you. So we are trying to create various kinds of events that will encourage people to perform, participate, and even sometimes just observe people on Metaverse. Right? From there, we come to construction. There are a lot of brick and mortar facilities that are already available. There are facilities where you have to build something first and then observe what's going to happen. So all those possibilities will be generated where people can just create something without actually having to build a brick and mortar space. So that saves a lot of time, money, space, and it's good for the environment as well. So for education as well, there are limitless possibilities. I'm sure all of your family members, most of the young ones might have already switched to the online systems. But imagine a space where you have better systems for education as well, where people are able to interact with the teachers and learn about the subjects a bit more. Just to give you a gist, even colleges like IIT during the COVID times, they were doing their convocation ceremonies online, right? They were trying to build a character and they tried at some extent. Imagine a space that is exclusively done for this and it is tailored to your activities. Very hard. And I'm really thankful to everyone who has come here today. And it's a big day for us. And I hope you enjoy your time. Suresh is already like this. The moment I came, he said, you do the script reading, I'll make sure this thing is going to rock the metaverse. Is it going to rock the metaverse? Fantastic. I am now going to call up on stage a man who's made an impact, who does not need any introduction. He is a man who's made sure when he was in the cricket team, the Indian cricket team, he made the impact of his life. Can we please put our hands up in the air and clap for none other than the one and only Irfan Pathan. Can we have a round of applause, please? Everybody make some noise! Everybody! Let's all do this together, the moment we all were waiting for. We have the man, the legend, I'll say, Irfan Pathan, joining us over here. The most stylish, speaks less, but his social media profile, you can go, he rocks it like anything. He's got this small boy of his, we love him, sir. And could we have 2 words from Irfan, please? Irfan, over to you. Good evening, Delhi. कैसे आप लोग? Good to be here. Good to be here. First of all, congratulations to Suresh Joshi. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी भारतीय टीम जिसने बैटल इन्फिनिटी कॉइन को इजाद किया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी खुशनसीबी है, मैं यहाँ पे आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज जो लॉन्च हुआ है उसमें आपकी जो कामयाबी है वो कोई रोक ना सके। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस। I would now request SJ to please present the bouquet to the man of the moment. Could we have a round of applause for Irfan? Please, come on, all of you. There's a huge dance and song routine which happens. We're going to have a great time. कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं पे जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, और उम्मीद करते हैं जमीन और आसमान जरूर मिलेंगे। Fantastic celebrities here. A bouquet has been given to Urvashi. I would request Urvashi to say a few words, please. Everybody is so busy with their social media accounts at the moment, nobody's clapping anymore. So if people at the back not busy, you can clap at least. यार दिल्ली में इस्तेमाल ऐसे नहीं होता, हाथ ऊपर चंगे तरह उठा के काम दे दी। You know, Delhi is loving it.
I was doing an event. I just wanted, Mr. Joshi, if you could, I could just translate towards something else. I told a man proposed to his wife. He said, I will not do it. I'm a Punjabi. I do it in my way. I said, so you will better say I love you. He said, no. I will better say, people are the charm of it. Good evening, ladies and gentlemen. Hello, Delhi. It's my pleasure to be here and for the IBAT, especially for Mr. Suresh, the co-founder of the company. I'm extremely elated to be here because he's a fellow Uttarakhand, and this is something which he has developed with the years of hard work and effort, with not just you but your entire team. So kudos to them. Apart from that, I just want to say that IBAT is one of the most promising and most and crypto coin in the crypto world, which is widely used by everyone, and it is very upcoming and progressing in such a rapid rate, which is truly elating for all of us. And I'm really very happy. I know that most of us are not really aware about the crypto world, the cryptocurrency, and the coin world. But IBAT is one of those coin cryptocurrency company which is actually today we do have a launch of it, but it is already competing with one of the biggest cryptocurrency coin exchanges as well. So I'm really very happy. It also has a lot of fantasy virtual games, which is far more exciting, and there are a lot of other facilities and which you all are going to enjoy. And I think the man himself who's standing here can actually describe a lot about it. But I'm really, it's really impressive, and I'm very happy to be here along with the fellow legendary cricketer Irfan Pathan. I'm really very lucky to be here and see you. So, thank you so much. Thank you guys. I love you all, and do not forget download the app. She's always been like that. She keeps it sweet and simple. Round of applause for the lady, please. It's not like this. I think you can leave your mobiles for 2 minutes and put your... Delhi is famous for welcoming celebrities like no other one does. So you should all dance together. I think let's keep the floor open. Play his favorite song. Irfan's favorite number? I don't mind that. I was told keep it sweet and simple, but I'll be naughty like a Punjabi. Irfan, if you come here... No, you don't dance, I know that. Both of you. I think they are going to lead us, and any favorite number of yours? Urvishi's favorite number? तो ये माहौल पार्टी का है, लेकिन मुझे स्लो सॉन्ग पसंद है. कोई नहीं चलेगा. My favorite, which I sing for my wife regularly, which is Mere Hum Safar. I cannot sing it alone. You have to come with me. If you guys are not singing, then I'm not. Okay? Alright. Promise? Yes, promise. Mere Hum Safar. क्या तुझे इतनी सी भी खबर क्या मेरी सांस रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर. I think but we are very, very well aware of what Urvashi can do on stage. She is magic. Nobody can drag Irfan. I'm telling you this. Fantastic voice, fantastic human being also. I really love it. We'll just play a track of yours, and I will. You're going to sing? Okay, fantastic. मालूम है सर बहुत टाइम मैं ऑफिसर बना दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए बंसीलाल के साथ कुलवंत कौर की रिपोर्ट. शोभा गेदा और आज मैं IBAT
इन्फिनिटी के लॉन्च पर आए हो। बहुत ही अमेजिंग इवेंट रहा क्योंकि उर्वशी और इरफान को मिलने का मौका मिला और बहुत ही अमेजिंग क्राउड है। हमारे दिल्ली के सारे इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे बीच में मौजूद है एंड रियली लाइक द इवेंट एंड होप ऐसे इवेंट एवरी ईयर होते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं इसमें और इसकी मार्केटिंग टीम हम लोग लंदन से मैनेज करते हैं। तो ये कॉइन हमने लॉन्च किया 11 जुलाई को फंडिंग के लिए, पब्लिक के लिए, और ये हमने 90 दिन का प्लान किया था, पर हम लोग सोल्ड आउट हो गए थे 25 दिन में। आज की जो सेरेमनी है उसको एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए है, जो पब्लिकली खरीद और बेच सकती है। कैटल इन्फिनिटी एक इकोसिस्टम है, इसमें हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम निकालेंगे। इसमें से जो मेन प्रोडक्ट लोगों को समझ में आता है वो है iBAT प्रीमियर लीग, जो जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, और ये पूरी ग्लोबली लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया का कोई बॉर्डर के पार भी आप खेल सकते हैं। इसमें हमारा जो मेन जो दुनिया जिसको हम मेटावर्स बोलते हैं वो है बैटल अरीना। वो हमारा एक विज़न है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ पर चीज़ें बहुत आसान हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो और लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो। सर पता है सरकार गेस्ट में जो है इरफान खान आया, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ किया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ आए। जब हमारी बात हुई चल रही थी किसको बुलाएं, तो इरफान खान एक ऑब्वियसली यूथ हैं और काफ़ी एक्टिव है, तो और स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ ये हमारा पॉइंट है, और उर्वशी हमारी उत्तराखंड की साइड है, वो तो ऑब्वियस चॉइस थी। सर बताएं, गवर्नमेंट ने भी, RBI गवर्नमेंट ने भी, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक अप्रूव किया हुआ है कि आने वाले समय में वो भी एक क्रिप्टो करेंसी की तरह करेंसी लाने की तैयारी में है, तो उससे किस तरीके से आपको लगा कि ये सारी की अप्रूवल मिल जाएगी आगे तक? नहीं, हम देखें सरकार का एक अपना एक कंसर्न्स होते हैं, और हम जो क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी हैं हम भी पूरी कोशिश करेंगे जो सरकार की कंसर्न है उनको एड्रेस करें, और सेम टाइम हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है, जो हमारी कम्युनिटी है, उनके जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी बल मिले। थैंक यू।